Fight until your bodies break, 86 scum! 86 एक बहुत ही ब्यूटीफुली क्राफ्टेड एंड माइंड ब्लोइंग सीरीज है. It presents you a beautiful blend of nihilism, apathy, death, tragedy, war, and what it means to be human. It perfectly reflects what has happened in the world since last few years. But बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं है कि what 86 is truly about. So, let me explain. मेरे लिए बात kind of सरप्राइजिंग है कि कुछ लोगों को छोड़कर मेजॉरिटी एनिमे कम्युनिटी को ये पता ही नहीं है कि what 86 is exactly about. So at this point मैं इतना तो श्योर हूँ कि लोगों ने इस एनिमे को अपने इमोशनल थ्रिलर्स की क्रेविंग को सेटिस्फाई करने के लिए देखा है. एंड टू दोज मंकी ब्रेन्स जिनको ये एनिमे बोरिंग लगा, उनसे मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आई थिंक यू शुड वॉच दीज काइंड ऑफ शोज़ व्हेन यू गेट लिटिल ओल्डर. बिकॉज मुझे भी ऐसा ही लगा था कुछ पल के लिए, पर जब मैंने सीज़न 2 फिनिश किया आई रियलाइज इट इज़ मोर देन समवन्स एजी वेट ड्रीम. 86 कहने को तो एक मिलिट्री फिक्शन है, पर यह हमारी रियल वर्ल्ड की सिचुएशन से इतने अच्छे से रेजोनेट करता है कि इसे फिक्शन बोल पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा. 86 असाटो का एक पैशन प्रोजेक्ट है जो हमारी सोसाइटी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कवर करता है, लाइक सिस्टमैटिक रेसिज्म, फ्लॉज ऑफ डेमोक्रेसी, बर्डन्स ऑफ वॉर, नाइलिस्टिक टेंडेंसीज इन ह्यूमंस, परफॉर्मेटिव एक्टिविज्म एंड और भी बहुत कुछ. एज ह्यूमंस हमने अपनी हिस्ट्री में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स और वॉर्स को देखा है, and every time it has been started by someone else, but all of the burden has fall over someone completely different. And I just really like how 86 draws some of his inspirations from World War II. Like 86 की story start होती है एक primary conflict पे focus करते हुए. A war between an endless swarm of autonomous combat drones born from the ruins of a recently destroyed superpower empire of Jihad and Republic of Sagmagnolia. The Empire of Jihad declared war on its neighboring countries and began attacking with the army of the world's first completely autonomous unmanned combat drones called Legions. Empire की इतनी सारी military strength की वजह से Republic की army decimated हो जाती है सिर्फ आधे महीने में, और after facing such a hopeless situation जहाँ पर वो अपने आधे से ज़्यादा ज़मीन को खो देते हैं, Republic's government makes 2 declarations. पहला was the evacuations of all of the Republic citizens to the 85 administrative sector. और दूसरा था द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 6609, या जिसे द स्पेशल वॉर टाइम पीस प्रिजर्वेशन एक्ट भी कहा जा सकता है. इस लॉ के तहत रिपब्लिक में रह रहे जितने भी कराटा डिसेंडेंट्स के लोगों को इनर्मिकल कैरेक्टर्स और सपोर्टर्स ऑफ द एम्पायर घोषित कर दिया और उनसे उनके सारे सिटीजन्स राइट्स छीन लिए. दे वर सेंट टू द कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स आउटसाइड ऑफ द 85 सेक्टर. Yet alone, of course, was in the violations of the Republic's constitution and the spirit of the 5-hued flag. और हाँ, कुछ एल्बाज और कराटाज ने इस एक्ट के ऊपर अपोज भी किया था, बट दे वर क्विकली सप्रेस्ड. सैन मैग्नोलिया की गवर्नमेंट अपने सारे फेलियर्स का ब्लेम कराटा पर डाल देती है बाय सेइंग रिपब्लिक्स डिफीट इन द वॉर केम एज द रिजल्ट ऑफ द कराटा स्पाइंग. और सिविलियंस के लिए ये रूमर्स को एक्सेप्ट कर पाना ज़्यादा ईजी था, रादर दैन कमिंग इन टर्म्स विद देयर कंट्रीज टेक्नोलॉजिकल इन्फ्योरिटीज. The Alba marked the Kararata as a lesser species, calling them 86. And this discriminatory approach was ultimately manifested 2 years later with the introduction of the drones managed by the soldiers, and those soldiers were from the 86 district. 86 हमें दिखाता है one of the most intricate models of the systematic racism. और अगर आपको इसके बारे में और जानना है, then pause the screen and read this. Anyway, ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सब होता है सैग मैग्नोलिया में, जो अपने आप को दुनिया की सबसे पहली मॉडर्न डेमोक्रेसी होने का प्राइड करता था. और ये हमें दिखाता है कि डेमोक्रेसी कितनी फ्लॉड हो सकती है. अगर सिटीजन्स अपनी गवर्नमेंट को ब्लाइंडली फॉलो करेंगे विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चंस, देन डेमोक्रेसी विल क्विकली बिकम मोनार्की या फिर एक डिक्टेटोरियल रेजीम. एनीवे, ये सब किनारे करके मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगा कि 86 सिर्फ खाली रेसिज्म पर बेस्ड नहीं है, और इसकी स्टोरी में रेसिज्म सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है. At its core, the 86 is about the unknown soldiers of the 86 district, who they fought alongside with the madness of regime of Sagmagnolia to protect the ones they loved. And not just the unknown soldiers of the 86 district, it's about everyone who died fighting for their nation, be it the United Kingdom of Rua Gracia, Alliance of World, or the Federal Republic of Jihad. मैंने बहुत लोगों को ये कमेंट करते हुए देखा कि everyone in the 86 district should have revolted against Alba or ran away from the battlefields to save themselves. पर उन्हें ये नहीं समझ आता है कि ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर वो भाग कर जा सकें वॉर से बचने के लिए. War is a duty of a soldier and dying comes as a part of it.
ये सुनने में थोड़ा क्रूल लगेगा, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेट बिहाइंड दीज वर्ड्स। इवन हमारी रियल लाइफ में भी अगर कोई सोल्जर बैटलफील्ड पर अपने ऑर्डर्स नहीं मानता है और बैटलफील्ड से डरकर भागने की कोशिश करता है तो उसे ट्रेटर कहा जाता है। और 86 की दुनिया में कुछ ही ऐसी जगहें बची हैं जहाँ पर लीजेंस का कब्जा नहीं है। 86 district is like the final frontier of their war, and beyond that is just unknown land infested by legions. So even अगर वो भागने की कोशिश करते हैं they will most probably die. उनके पास सच में सिर्फ दो ही ऑप्शंस हैं, either they die fighting or die running away. And they decided to fight for the ones they loved, be it the Alba or someone from the Kadarata. They wanted to die with pride and not as a scum. Just like there are scums among the Alba, there are scums among the 86 as well as the ones who mistreated Anju for being a half-blooded Alba or Kai for her hair color. Not every Alba is bad and not everyone in the 86 is good. 86 is about the separation between our reality and the battlefield. एक साइड पर है मैडनेस से भरा हुआ थिएटर ऑफ वॉर और दूसरी साइड पर है हमारी मंडेन लाइफ. As someone living peacefully in the safety of our homes, we tend to forget what that peace actually cost to someone. किसी भी नेशन के पीस के लिए न जाने कितने लोग ऑपरेस्ड हुए हैं, और 86 इन दोनों रियलिटीज़ को बहुत अच्छे से दिखाता है. On one side, we see drones controlled by people marching towards the enemy, and in the matter of seconds, we are taken to a different world, a calm and peaceful world that many will say is normal life. 86 is about the lone commander and the grim reaper of the spearhead squadron, Shiren Nozen, carrying the burden of his fallen comrades. As a commander, आपको अपने दिए गए ऑर्डर्स को फॉलो करना ही पड़ता है, इवन दो अगर आपको अपने पूरी स्क्वाड्रन को एक सुसाइड मिशन पे अपने साथ क्यों न ले जाना पड़े. And accomplishing the mission and getting everyone in your squadron out of there alive is your top priority. But as a commander, if you're the only one coming out alive, then you have to carry the burden of guiding all of your personals towards their death. Shinoi Nezen, the Undertaker, or as they call him in the Spearhead Squadron, Shinigami. He is the one who carries the burden of everyone who died before him. He has taken the mission to record the names of his fallen comrades and remember them until he meets his grave. शिनई की एक मिस्टीरियस एबिलिटी की वजह से उसे अपने सारे फॉलन कॉमरेड्स की लास्ट मेमोरीज एक वॉइस के रूप में सुनाई देती हैं, और एक सर्टेन पॉइंट के बाद हमें इसका इफेक्ट शिन की साइकोलॉजी पर दिखने लगता है, एज ही फील्स ही इज गोना बी द ओनली वन हु विल बी लेफ्ट बिहाइंड. 86 is also about the naive and kind-hearted Major Viladinina Millais and all of the Alba who fought along with everyone from the 86 district. Viladinina Millais, also known as Lena, is someone who is wise enough to know all of the lies behind the 86 but naive enough to still believe in the Republic's ideals. पूरी स्टोरी में हमें लेना के कैरेक्टर में बहुत सारी डेवलपमेंट देखने को मिलती है, as her naive ideologies finally come crashing down upon the cruel and heartless reality. और रिसेंट टाइम में हमें ऐसे बहुत से लोग देखने को मिले हैं who are doing performative activism just for some internet points. Well, to explain in more detail, performative activism is a kind of activism where people show support to certain matters just for some personal satisfaction. हाँ, ये मैं मानता हूँ कि आवाज़ उठाना ज़रूरी है, पर मुझे नहीं लगता तुम्हारी बायो और यूज़र नेम में उठाई हुई आवाज़ से कुछ होने वाला है. Just by putting "we stand for this" in your bio or user name is not going to change anything. It's not enough just to feel for them. You have to be proactive in your support. And also, talking about Lena again, I think she sincerely tried to help everyone in the Spearhead Squadron, but subconsciously she did not consider them human. But after the death of Kaishi, she gets to know the wrong she has been doing. Lena को ये बात आगे जाके realize होती है कि how different both of their worlds are and how she doesn't know anything about the 86. Personally speaking, मुझे लेना का कैरेक्टर कुछ खास पसंद नहीं आया था, just because how irritating it was to see her argue. But now I have finished it and I can say I don't hate her. In fact, it's kind of the opposite. I mean, even though when she realized how deeply racism has ingrained into the Republic, she still tried to fight for her ideals. And she finally became the light who saved Shin and everyone in the 86. 86 is also about the author's passion for military and military hardware. I mean, 86 की author Asato बचपन से ही मेका एनिमे की बहुत बड़ी फ़ैन रह चुकी है. और अगर आपने 86 का लाइट नॉवल पढ़ा होगा तो आपको पता ही होगा कि उसके इंट्रो के सेक्शन में हर एक जगह नॉट यूनिट और मिलिट्री हार्डवेयर को कितने डिटेल और कितने अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है. ट्रेडिशनली जब भी हम मैक्स के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? लार्ज बाइपेडल मैकेनिकल स्ट्रक्चर्स. पर अगर हम रियल लाइफ के हिसाब से देखें तो ये डिज़ाइंस पूरी तरीके से लॉजिक के बाहर हैं. इसलिए 86 इन ट्रेडिशनल मैक्स को लेकर अपना एक फ्रेश टेक प्रेजेंट करता है, where we see mecha designs based on arthropods rather than large bipedal robots. और अगर हम इन्हें हमारे एग्जिस्टिंग वर्ल्ड के रोबोट्स और ड्रोन से कंपेयर करें तो हमें पता चलेगा कि इनके बीच की सिमिलैरिटीज़ बहुत कम ही हैं.
They are perfectly suited for combats in the destroyed post-apocalyptic urban combat regions and provides a massive range of tactical and strategic possibilities for its pilots. Even एक इंटरव्यू में असारो ने कहा था कि she got the idea of 86 when she was reading a newspaper on the drone attacks, and so she decided to write a light novel series about the ethics of that and how soldiers work in the battlefield. I mean, it's kind of remarkable कि कोई ऑथर ऐसे इंटेंस और इमर्सिव वर्ल्ड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स को क्रिएट कर सकता है. और मैंने कुछ वॉर वेटरन्स को इसके बारे में बात करते हुए भी देखा है कि कैसे 86 एक कॉम्बैट सिचुएशन की रियलिटी को कितने अच्छे से कैप्चर करती है. Sometimes it's just peaceful and the next thing you know it's an immediate firefight. And in an active battlefield you don't even have time to grieve for your fallen comrades. It's just being sad for a few seconds and then going back to the madness. 86 not only explores the topic of how racism and hate gets mixed into culture and society, but also the hypocritical nature of a nation's ideals. 86 shows you how flawed democracy is, or how we push the burden of war and the separation between the battlefield and our reality. And the people who are making jokes and memes about the World War III situation and all of that, well, in my opinion, you guys are no better than the Alba. Overall, 86 अपने फैंटेसी की सेटिंग और नैरेटिव एस्पेक्ट्स को यूज़ करके अपनी ऑडियंस को एक ऐसी स्टोरी प्रेजेंट करती है विच इज़ रियली क्लोज टू आवर रियलिटी. जस्ट लास्ट कुछ ही सालों में हमने बहुत सारे वॉर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स को देखा है एंड वी हैव सीन डेथ एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ सो मेनी पीपल, और 86 की स्टोरी इन सारे इवेंट्स को बहुत अच्छे से टच करते हैं. It stands as a modern masterpiece which is not understood by many people but is loved by everyone who did.